हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ। ये देखो आप, आपको क्या दिख रहा है? सन, और उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स। कभी आपने स्काई को देखा है ध्यान से? अगर आप स्काई को देखोगे और वो भी रात में, तो आपको बहुत सारी चीजें आसमान में चमचमाते हुए दिखेगी। कभी सोचा है वो है क्या? What are they made up of? So to answer all these questions, I'm I'm here to answer this. So let's start. The first line says, "How wonderful it is to watch the sky after sunset." Of course, because once the sunset is there, you'll see the stars are twinkling and many of the things. Moon. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you will see that the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with the tiny, shining objects. So you have seen these tiny, shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जब आप रात को देखोगे स्काई को, तो कुछ ऐसा दिखेगा जो टिमटिमाते हुए दिखेंगे, और कुछ ऐसा है जो बिल्कुल ही नहीं, वो एकदम ग्लो करते रहते हैं, कांस्टेंट लाइट आपको इंटेंसिटी देते रहते हैं। सो व्हाट आर दे? Moving to the next paragraph. Along with this bright object, you can also see moon on the most of the days. आपको मून भी दिखेगा। आपको दिखेगा, कभी किसी ऐसी रात होगी जहां पे मून बिल्कुल नहीं दिखता, कभी ये मून दिखता है, और दैट टू उसके शेप बदलते रहते हैं। तो वो शेप कैसे होता है? विल सी द नेक्स्ट लाइन। It may however appear at the different times with a different shape and a different position. You can see the full moon only once in about a month time. It is the full moon night or a पूर्णिमा. This is very important. You should remember कि full moon night को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। इसमें क्या होता है कि आपका जो मून है, ठीक है, ये है आपका मून, तो ये फुल मून है, ठीक है। दिस इज पूरा मून दिख रहा है, दैट इज फुल मून। अ फोर्टनाइट लेटर, व्हाट डज द फोर्टनाइट मीन्स? आफ्टर 14 दिन के बाद, आफ्टर 14 डेज, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। दिस इज द न्यू मून नाइट और अमावस्या, ठीक है। आपको पूरी काली अंधेरी रात दिखेगी और ये मून नहीं दिखेगा। सो ये जो आपका मून का शेप जो चेंज होता है, कभी दिखता है, फिर कभी ऐसा दिखता है, कभी एकदम ऐसा दिखता है। दीज आर, ये जो मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो एक 27 डेज में किस तरीके से वो चेंजेस करता है, तो ये सारे जो है इसको फेजेस ऑफ मून कहते हैं, ठीक है। तो फेजेस ऑफ मून जो है ये, अगर आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए, तो जस्ट मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। I'll make a separate video for the phases of moon. अभी के लिए आपको याद रखना है कि फुल मून नाइट को क्या कहते हैं। फुल मून नाइट हमारा पूर्णिमा होता है, और जो हमारा न्यू मून लाइट होता है वो अमावस्या होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी तक की जितनी पढ़ाई किया उसमें से सिर्फ एक यही अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। डू यू वंडर व्हाई वी कैन नॉट सी द मून एंड ऑल अदर ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? डे टाइम में आखिर ये दिखते क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखते हैं? इट इज बिकॉज, इसलिए क्योंकि कोई एक ऐसा ब्राइट ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ये ब्राइट ऑब्जेक्ट है और एक ये भी है, ठीक है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसको भी ओवरकम कर दे, ठीक है। आपको जैसे कि रूम में एक छोटा सा कैंडल ले लो, ठीक है, और एक यहाँ पे ट्यूबलाइट जला दो। अगर इस ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इस कैंडल की लाइट को क्या करा, इसने सप्रेस कर दिया, ठीक है, तो आपको ये कैंडल की लाइट नहीं, ये ट्यूबलाइट की लाइट नजर आएगी, है ना। तो इस लाइन का वही मतलब है, कोई बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो वो क्या होगा, वो उसकी इंटेंसिटी को खत्म कर देगा। सो द सन, मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट shining in the night sky are called the celestial body. You need to learn the definition of this. If anybody can ask you what is celestial body, तो आपको याद होना चाहिए sun, moon and all the other objects. sun, moon के साथ जितने other object जो shine करते हैं नाइट स्काई में, उसको celestial body कहते हैं। ये celestial body जो होते हैं वो बिग है,
और हॉट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी क्या है? पहला पॉइंट कि दी सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। ठीक है, ये क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस। ये जो गैसेस है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आखिर कौन से गैस है जिसकी वजह से इनके अंदर काफी इतनी हीट आती है, तो दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। याद रखना, ये आप अगर आगे के क्लासेस में देखोगे कि हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, और हीलियम को एच ई लिखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर हीट काफी ज्यादा जनरेट होती है, और जैसे ही इनके अंदर हीट होते हैं तो दे इमिट लाइट। तो वो जैसे ही लाइट एमिट करते हैं तो आपको यह दिख जाता है कि ओके, कुछ चमक रहा है। ठीक है, दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। अब बताओ, आखिरकार ये सन जो है, सिर्फ एक ही स्टार, ऐसा बहुत बड़ा सा स्टार जो दिन में भी दिखता है, बिकॉज द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार। ठीक है, अगर इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और ये अगर सारे जितने स्टार्स देखे जाए तो उसमें सबसे नियरेस्ट जो हमारे अर्थ के है, दैट इज द सन। ठीक है, so moving to the next paragraph, countless twinkling stars in the night sky are similar to sun. वो जितने स्टार्स आपको रात में दिखते हैं वो सन के जैसे ही है, बट यू डू नॉट फील द हीट एंड लाइट। लेकिन आप उसको, उसका लाइट और हीट नहीं फील कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही दूर है आपसे। जितना दूर होगा, तो वो बिल्कुल सिर्फ उसकी रोशनी हमारे तक आ सकती है, उसकी वार्मथ नहीं आ सकती है। ठीक है, तो सन इज द ओनली स्टार विच इज वेरी नियरेस्ट टू द अर्थ। So with this page, I'll make want to tell you. Please remember what is full moon or Purnima, new moon or Amavasya. What is celestial body, and what are the characteristics of star? You must have noticed that all the objects look smaller when you see from a distance. ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप किसी चीज को बहुत दूर से देखते हो तो वो बहुत ही छोटा दिखता है। जैसे कि आप हर दिन देखते होगे कि आसमान, ये स्काई में बहुत हमारे एरोप्लेन्स घूमते रहते हैं। ये इट्स लाइक, तो वो बहुत ही छोटे छोटे से माइन्यूट से एकदम टाइनी से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना दूर हमसे दिखेगा वो उतना ही छोटा दिखेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई स्टार्स, लेकिन वो एक्चुअली में होता कितना बड़ा है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर स्टार्स जो है हमसे इतने ज्यादा दूर है कि वो हमें दिखते नहीं है, बहुत ही छोटे दिखते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ स्मॉल पार्टिकल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, while watching the night sky, you may notice various pattern formed by the different type of stars, different group of stars. ये जो स्टार्स है, ठीक है, ये स्टार्स जो है आपस में मिलके एक ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न ले लेते हैं कि वो आपको एक दिखेगा कि कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है, दैट ये ग्रुप ऑफ स्टार्स का, तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, so remember this definition. What is constellation? That the number of group of stars, that form a particular pattern in a sky, and that pattern is called the constellation. Okay. So most common constellation जो आपको दिखेगा, जो look at this figure, you will see that there are seven stars. Count the number of stars: one, two, three, four, five, six, seven. These are seven stars, and see how its pattern is. ये स्टार इस तरीके से है कि इसका जो लास्ट टू स्टार्स है, इट इज इन द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन जो है, यहाँ पे एक जो नॉर्थ स्टार है उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन में जाके मिलता है। तो ये लड़की जब इसको देखेगी तो इट विल बी लाइक कि ये जो नॉर्थ स्टार के साथ अगर इसने लाइन बनाया, तो दिस विल शो द डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ। ठीक है, so, with the help of this is called the Ursa Major, or the Big Bear is the one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is Saptarishi. Saptarishi is the group of the seven stars. Sapt means seven, and Rishi means sages. It is a group of the seven star. It form a part of Ursa Major constellation. Okay. So, next, in the ancient time, the people used to determine the direction during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. So, I have already told you how the north direction comes from this. Okay, it always remain in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at the figure 1.1, which we have already seen. Till now, you have learned what is a star, what stars are made up of gases, it has its own heat, and it has light. Okay, now these was also a celestial body. Okay, now moving to the second celestial body. Some celestial body do not have heat, so stars have heat, but it does not have its own heat and light. Okay, so they are lit by the light of stars. Such bodies are called the planets.
Okay, if anybody asks the difference between what is a star and difference between star and planet, please tell this. Okay, what planet comes from the Greek word that is planetia, which means wanderer. The Earth on which we live is also a planet. So Earth has its own light? No. Own heat? No. दिस इज हम लोग के पास रोशनी कहाँ से आती है? रोशनी आती है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सन विच इज अ स्टार. सो इट इज लाइक वही बता रहा है कि इसको लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार से मिलती है. इट गेट ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just like a moon. अब ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहले ये सन है. सन के सामने जो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है? अर्थ है. ठीक है. अर्थ जो है इसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है. अब ये अर्थ के साथ भी कोई रिवॉल्व कर रहा है ना? ये क्या है? मून है. ठीक है. तो मून ऐसा होगा ना, जब आप मून पे बैठ के जब आप अर्थ को देखोगे तो इसकी रोशनी इसके ऊपर आएगी, तो इसका रिफ्लेक्ट होगी. तो ये मून से दिखेगा कि अर्थ भी शाइन कर रहा है, बट एक्चुअली होता नहीं है. उसी तरीके से अगर आप देखते होगे कि मून का इसके घूमा, तो देखिएगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी होने की वजह से कभी ये पूरा दिखता है, कभी ये. तो ये क्या है? हमारे अर्थ से मून को देखा जाए तो मून भी कभी कभी आपको पूरी रोशनी देती है, पूरा लाइट दिखता है, तो वो ब्राइट दिखता है. तो ये क्यों दिखता है? बिकॉज ऐसे वो घूम रहा है. ठीक है. इट गेट ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम सन विच इज द नियरेस्ट स्टार. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, it will appear to be shining just like a moon. The moon that we see in the sky is a satellite. Okay. So now we have come to the third topic. ये that is moon. Moon क्या है? Moon एक satellite है. ठीक है. आपने नॉर्मली अगर आप न्यूज में भी देखोगे तो सैटेलाइट का मूवमेंट ये सब देखते होगे, बट दैट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. which we are talking about is a natural satellite. ठीक है. So natural satellite, so this means that every planet has its own satellite. ओन सैटेलाइट. हमारा अर्थ का जो सैटेलाइट है, ये अगर अर्थ है तो इसके पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून. ठीक है. याद रखना. इट इज द companion of our earth and move around it. Like our earth, there are 7 other planets that get their heat and light from the sun. Some of them have their own moon too. सो विद दिस हमने जो ये पेज फिनिश किया है. प्लीज रिमेम्बर व्हाट इज कॉन्स्टलेशन. उर्सा मेजर जो है हमारा कैसे नॉर्थ का डायरेक्शन फाइंड करते हैं. ठीक है. ये उसके अलावा व्हाट इज प्लैनेट, हाउ द प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार. ठीक है. एंड व्हाट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ओके. सो विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सोलर सिस्टम. व्हाट इज सोलर सिस्टम? सन, 8 planets and satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. They form they form solar system. We can call it as a solar family with the sun as a head. Why we are saying like this? Just look at the next. उसमें सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ? मरकरी. तो मरकरी को एक पूरे सन का चक्कर लगाने में 88 डेज लगता है. बट अगर ये हमारा पूरा ये अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी तो करेगा, है ना? रोटेट करेगा, पूरा वन सर्कल बनाएगा, वन पूरा बनाएगा, स्पिन करेगा. तो इट टेक दैट इज 59 days. सो यू गॉट दिस पॉइंट. What is the one orbit around the sun and one spin on its axis? One orbit around the sun is revolution. दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. मतलब कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चीज को स्टैटिक रख दो. ठीक है. और आपने क्या किया? उसके आजू बाजू गोल गोल घुमा. ठीक है. तो इसको कहते हैं रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन. लेकिन जैसे कि आप एक लट्टू लेते हो, और वो क्या करता है? वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है, दैट इज रोटेशन. ठीक है. तो वन स्पिन इज रोटेशन. ओके. एंड ऑर्बिट अराउंड द सन, दैट इज रेवोल्यूशन. तो आपको समझ नहीं आ रहा हो कि व्हाट इज ऑर्बिट. आप ये देखो, अगर मरकरी घूम रहा है तो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, दिस पाथ. ये अगर वीनस घूम रहा है तो ये एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. ओके. सो नियरेस्ट प्लैनेट
Mercury. Second is Venus, then Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, now moving to the next page. Sun is the center of the solar system. So you got to know what is solar system. Sun, eight planet, and there's some other, but which that is asteroids and meteors which you have seen. That is solar system. So the sun was the center of the solar system. आपको बताया बीच में क्या है आपका sun है. It is huge and it is made up of hot gases. Q, why it is made up of hot gases? Because I have already told you this is a star. Okay, it provides the pulling force. This pulling force क्या है? इसको पेड़ से गिरते हुए देखा है. वो जमीन पे आता है. Why does it come? Because of there's a particular pull. That is gravitational pull. उसी तरीके से it provides the pulling force. इसको pull करके रखता है सारे solar system को so that it become a small, a closed entity. Okay. So sun is the ultimate source of a heat and a light for the solar system. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is very far from us. ये बहुत दूर हमसे है. सारे स्टार्स में सबसे पास में यही है, बट फिर भी ये बहुत दूर है. कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, सो जो आपका सोलर सिस्टम का वर्ड है, दैट इज सोल इन द रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड एंड सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन. The family of the sun is therefore called the solar system. सोलर सिस्टम की सन की जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम कहते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, that is planet. There are eight planets in a solar system. Already I have told you. According to the distance, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. You need to remember this, the sequence of planets. Okay. There is an easy way to memorize this. My very efficient mother just serves us none. M stands for Mercury, V stands for Venus, E stands for Earth, M stands for Mars, J stands for Jupiter, S stands for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. Okay. All the Earth planets of the solar system move around the Sun in a fixed path. These paths are elongated and are called orbits. I've told you this is a orbit. If this is a Sun, it's moving in a particular path around the Sun. That is particular is called the orbit. Mercury is the nearest to the Sun. It takes around 88 days to complete one round around its orbit. 88 days to complete the entire revolution. Venus is considered as the Earth twin. If anybody asks you what is Earth's twin, then it is Venus. Okay, Venus. Why it is called the Earth's twin? Twin, what does you mean by twin? Twin is judwa. Okay, so it because of its size and shape, it's very similar to Earth. Before अभी 2006 से पहले, before August 2006, Pluto was also considered as a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that the Pluto, like other celestial body discovered in the recent past, may be called as a dwarf planet. और इसको अब हम लोग particularly जो है ये जितने मेरे planets है उसमें consider नहीं करते. Initially it was a nine planet, but now we are learning only eight because Pluto has been considered as a dwarf planet. Moving to our Mother Earth. So the Earth is the third nearest planet of the Sun. Its size, that is fifth largest planet. Which is the fifth largest planet? It is the Earth. It is slightly flattened at the pole. It's flattened at the pole. What is pole? Just see this Earth. Okay? आपने कभी ऑरेंजेस देखा है? संतरे, है ना? उसका बीच का हिस्सा इसको मान लो, जहां से आपका दोनों हिस्से होते हैं, उसको यहाँ पे ले लो. इसको कहते हैं इक्वेटर. ठीक है? और इसके जो दो टॉप के हिस्से हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसको कहते हैं पोल. ठीक है? ये है पोल, दोनों है पोल. ठीक है? जो पोल का रीजन है वहां पे क्या है, ये फ्लैटेंड है. ठीक है? फ्लैटेंड होने की वजह से इट्स शेप जो है वो कैसा बन जाता है, जियोइड. जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप. ठीक है? देयर आर अदर फैक्ट्स व्हिच इज गिवन हियर एंड हियर. आई विल रीड थ्रू दिस आल्सो. वर्ड ओरिजिन. In this word, there is a particular that is what is geology, geometry, and geoid. So, what is geo? Geo is meaning earth. Okay. So, कभी भी कहीं भी आया.
Logi. This means study. Metry. Metry means measurement. And oid means resembling in the shape. Okay. So what is geology? Study of earth. Okay. Are you able to see this? This. What is geology? It is the study of earth. What is geometry? It is the measurement of earth. And what is geoid? That is resembling the shape of the earth. Okay. Do you know the human have always been fascinated gazing at the night sky? Those who study the celestial body and their movement are called the astronomers. Who are astronomers? जो celestial bodies और उनके movement के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको astronomers कहते हैं. Aryabhatta was one of the astronomer of the ancient time. Okay. So with this, we have this page also. Moving to the next page. Condition favorable to support what we are studying. We are studying about Earth. The conditions favorable to support the life are probably found only on Earth. This will be a question which will be asked by in your examination also. What are the properties and how the life is supported by Earth? Because it's neither hot nor too cold. पहला point. ये ना तो गर्म है और ना ही ये ठंडा है. जितना मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए उतनी टेम्परेचर इसके पास अवेलेबल है. सेकेंड, इट हैज वाटर. हमें पानी पीने के लिए चाहिए और हमें एयर चाहिए. तो वो भी हमें कौन दे रहा है? अर्थ दे रहा है. दीज ऑल आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. The air has a life supporting gases like oxygen. Okay, so it has oxygen also. Because of these reasons, the Earth is a unique planet of the solar system. From the outer space, the Earth appears blue. Why does the Earth appear blue? Because two-thirds of the Earth's surface is covered by water. Okay, अगर आपका टोटल अगर मान लो कि ये अर्थ है तो इसका टू थर्ड हिस्सा है ना, पूरा का पूरा ये किससे कवर्ड है? वाटर से. तो दूर से क्या दिखेगा? ये पानी पानी जैसा दिखेगा और पानी का कैसा दिखता है? दैट इज ब्लू. सो इट्स अ blue planet. Okay. Now moving to moon. Our Earth has only satellite. I've already told what a satellite is. So satellite is a celestial body that move around the planet in the same way as the planet move around the sun. जिस तरीके से प्लैनेट मूव करते हैं, अगर ये सन है तो प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड, वैसे ही तुम्हारे जो प्लैनेट है हर प्लैनेट के अराउंड एक पर्टिकुलर हमारे सेलेस्टियल बॉडी मूव करती है, उसको कहते हैं सैटेलाइट. ठीक है. सैटेलाइट. तो हमारे अर्थ के पास कौन सा सैटेलाइट है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. प्लीज टेल द आंसर. राइट इन कमेंट बॉक्स. इट्स मून. ओके. So our Earth is the only satellite. Earth has only one satellite, that is Moon. Its diameter is one quarter that of the Earth. Means कि अर्थ से ये छोटा है ये साइज में. और देखो इसका शेप कैसा है. इसका शेप ऐसा सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. इट appears so big because it's nearer to our planet than other celestial body. It is about 3,84,000 kilometers. Are you, do you know how to read these things? If you want a video on this also, how to read these values, just comment me in the comment box. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and from that of the Moon. Moon moves around the Earth in about 27 days. एक मून को अर्थ के अराउंड मूव करने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज. एंड इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. अगर रोटेशन में भी कितना टाइम लग रहा है? 27 डेज. ठीक है. सो कभी भी अगर आपका ये अगर मेरा अर्थ है और उसके अराउंड अगर रेवोल्यूशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है, और दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे हो रहा है, तो आपको क्या ही दिखेगा? सिर्फ एक ही तरफ का हिस्सा दिखेगा. मतलब यू विल बी एबल टू ओनली वन साइड ऑफ द मून. Therefore, the only one side of the moon is visible to us from the earth. The moon doesn't have the condition favorable for life. What was the condition favorable for life? I've already told you. First is you need water. It should, the temperature should be that should be medium. Then water, air, oxygen, all are essential. So it doesn't have the condition favorable for the life. It has mountain, plains, and depression on its. The cast shadow on moon surface. Look at the mountains, plains, everything which are heavy structures. These cast shadows on the moon surface, because of which you see certain particular dark areas on moon. Okay.
तो कहते हैं मून पे दाग है, चांद पे दाग है। ये क्या दाग है? पता चल गया? ओके। व्हाट इज एस्टेरॉइड्स? Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which are which also move around the sun. These bodies are called the asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that the asteroids are part of the planet which have exploded many years back. ये आप पहले मैं आपको बताती हूँ कि from the diagram. Just see this. I've already told you what the asteroid, how does this asteroid look like? This is between the Mars and the Jupiter. Okay. मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड का मैंने बेल्ट दिखाया था, इसी के बारे में वो बातें कर रहा है. सो एस्टेरॉइड्स ऐसा कहा जाता है, इट्स जनरली सेड दैट वो प्लैनेट का हिस्सा है, बट उस प्लैनेट में कभी किसी ऐसा टाइम हुआ था जब एक्सप्लोजन हुआ और वो टूट गया. तो वो टूट के फिर वो रह गया है हिस्सा. तो therefore scientists are of the view that the asteroids are the part of the planet which have exploded many years back. Okay. Moving to the next, that is what is meteoroids. Meteoroids are the small pieces of the rock which move around the sun. Are called the meteoroids. Sometimes these meteoroids come near. आपने कभी ऐसी काली अंधेरी रात में देखा है कि कुछ एक रोशनी की चीजें आती है ऐसे और वो टूट जाता है? तो लोग कहते हैं कि अगर इससे विश मांगो. दीज आर द सर्टेन मिथ्स विच आर जनरली सेड. हमें उससे मतलब नहीं है. वी आर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने कभी ऐसा लाइन पड़ता हुआ देखा है? दीज आर व्हाट? दीज आर मेटेरॉइड्स. ठीक है. तो दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ. तो ये लाइट क्यों देता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये एक रॉक का पीस है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो आने की कोशिश करता है. जैसे ही वो आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका फ्रिक्शन हो जाता है इस लेयर सबके साथ. जैसे फ्रिक्शन हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये जल जाएगा. ये जल जाएगा तो इससे क्या होगी? रोशनी पैदा होगी. जैसे ही रोशनी होगी तो ये हमें दिखेगा. ठीक है. So small pieces of rock which move around the sun is called the meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. It causes flash of light. Sometimes the meteoroids without being completely burned fall on the earth. Sometimes ऐसा होता है कि अर्थ के सरफेस पे ये डायरेक्ट फॉल कर जाता है. तो ये क्या होता है? गड्ढा बना देता है. ठीक है. इट क्रिएट्स अ hollow. Now moving to next, what is galaxies and all? Just see this first. See this. You can see the whitish. This this is galaxy. Okay. So the whitish board band like a white glowing path around the sky on the clear starry night. It is the cluster of the million of the stars. कैसा है ये cluster है? This band is called the Milky Way galaxy. Okay. Our solar system is a part of this galaxy. हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम ये किसका पार्ट है? ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. रिमेंबर दिस. व्हाट इज द आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. Our solar system, then in ancient time, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Therefore, it was name was Akash Ganga. The galaxy is what is galaxy? Galaxy is the billion of stars and the cloud of dust and gases. These are the million of such galaxies. If there are million of such galaxies, then it will make a universe, Brahmand. Okay. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are trying to find out more and more about it. We are not very certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. Okay. With this, we have completed this chapter. Question. How do the planet differ from the star? I've already told you the answer, but if you want any PDF of this, just let me know about the solar system. Okay. Name all the planets according to the distance sequence I've told you. Why is the Earth called a unique planet? Okay. Why do we see only one side of moon always? And what is the universe? Okay. Please answer this question in the comment box. Answer of this question I want, and I want to see who have gone thoroughly with this lesson. Okay. And if any problem, any if you want any assistance on any particular topic, do let me know. With this, I'm ending this chapter. Thank you, Jai Hind.